दोस्तों आजकल एक अलग टाइप का कोल्ड वॉर चल रहा है बिटवीन रिक्रूटर्स एंड द जॉब सीकर्स और बहुत सारा जनरलाइजेशन हो रहा है। रिक्रूटर्स का कहना है जॉब सीकर्स आर डूइंग ऑल ऑन एथिकल थिंग्स, दे आर नॉट बीइंग ऑनेस्ट, दे आर बीइंग टू मच ग्रीडी एंड उनके पास मल्टीपल ऑफर्स होने के बावजूद दे डोंट कम्युनिकेट टू द रिक्रूटर। देयर इज अ बैकआउट एंड ड्रॉप ऑफ एट एनी स्टेज एंड especially at the last moment in the hiring process। और कई बार ऑफर एक्सेप्ट करने के बाद ऑन द ज्वाइनिंग डे देयर इज अ नो शो। दूसरी तरफ कैंडिडेट्स का कहना है रिक्रूटर्स आर एक्सप्लॉइटिंग देम, they have more budget but then they are giving very less to the candidates, they also take a lot of delay in the process, so that's why the process is getting stretched। और रिक्रूटर गोस्टिंग भी बहुत सारा हो रहा है। ऑफर स्टेज पे डिस्कशन आने के बाद भी रिक्रूटर्स डिसअपियर हो जाते हैं। तो बोथ द साइड्स आर हैविंग सम एक्सपीरियंसेस दैट दे आर शेयरिंग विद द पीपल, बट उसमें एक प्रॉब्लम यह है कि एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट द पेन एरियाज, बट कहीं पे कोई सॉल्यूशन दिख नहीं रहा है। एंड दैट्स व्हाई आई फील आवर हायरिंग सिस्टम इन आईटी इंडस्ट्री इज ब्रोकन एट द मोमेंट। और मेरे हिसाब से यहाँ पे जो मेन रीजन है वो है लैक ऑफ ट्रस्ट एंड फ्रॉम बोथ द एंड्स। इन माई 21 years of IT career, I came across many recruiters having high level of professionalism, and I also came across many candidates who are not just extremely talented, but they have shown high level of commitment and sincerity throughout the process. But it's very frustrating experience when one of the party is genuinely not interested or invested in the process and breaks the trust of other person। तो अब हमारे पास दो ऑप्शन रहते हैं, आइदर वी कंटिन्यू ब्लेमिंग ईच अदर और वी ट्राई टू फिक्स द प्रॉब्लम so that the trust is re-established and job searching and candidate hiring exercise becomes a better experience for everyone, and it's a collective responsibility of everyone। So I'll try to put my points and suggestions here based on my experiences and the practice that I follow as a job candidate and as a hiring manager, and I welcome your suggestions and inputs in the comments so that we can collaboratively come up with a working solution। So as a job seeker, अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो जहां आपके पास मल्टीपल ऑफर्स हैं, ऑब्वियसली यू विल जस्ट गो अहेड विथ वन ऑफर। तो आपने जहां पे भी डिसाइड किया है कि आई एम नॉट कंटिन्यूइंग विथ दिस पर्टिकुलर ऑफर, वहां पे आपको ओपनली रिक्रूटर को कम्युनिकेट करना है। कितनी इंफॉर्मेशन रिवील करनी है नहीं करनी है दैट्स अप टू यू। एक कम्युनिकेशन होना चाहिए जहां पे ये लूप क्लोज हो, क्योंकि कंपनी हायरिंग मैनेजर रिक्रूटर्स दे आर आल्सो इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स इन रिक्रूटिंग द कैंडिडेट्स एंड वी नीड टू रिस्पेक्ट दैट। अगर आप ये नहीं करते हो then that's a question on your integrity, and this has to be done as early as possible, and let's not keep the other person in dark। और यहाँ पे रिक्रूटर्स को भी समझना जरूरी है कि इट्स ओके फॉर अ कैंडिडेट टू apply for multiple jobs, just similar to how a company is evaluating and assessing multiple candidates for the same role। And as a recruiter, we need to make sure there is open and transparent communication with the candidate about the job, about the role, about the salary compensation, and about the overall hiring process। If there are any delays, then it has to be proactively communicated to the candidate। और 2025 वाले जो रिसेशन वाले जॉब मार्केट में ये एक और भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, बिकॉज एज अ रिक्रूटर यू मे नॉट बी अवेयर अबाउट द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द कैंडिडेट। यहाँ पे एक छोटा सा एक्ट ओपन कम्युनिकेशन का एंड टाइमली कम्युनिकेशन का कैन मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस टू द कैंडिडेट। अगर एटीएस थ्रू रिजेक्शन हो रहा है या फिर पैनल या रिक्रूटर थ्रू रिजेक्शन हो रहा है ड्यूरिंग द स्क्रीनिंग और द इंटरव्यू प्रोसेस, कैंडिडेट को वो टाइमली इन्फॉर्म हो जाना चाहिए।
so that the candidate can progress with his or her other options. अगर रिजेक्शन इंटरव्यू प्रोसेस में हो रहा है, whether it's after the first round or after the final round, that communication first has to be done through the phone call. If you are just sending out an email, then it's a very robotic and one sided communication. The candidate has invested time and energy in the process, so he or she deserves a proper communication and messaging. और इंटरव्यू के दौरान डिसअपियर हो जाना, अनरीचेबल हो जाना, these are all very bad things. It is not just impacting the candidate very negatively, but it is also damaging company's brand image and also questions your integrity and the work ethics. And now for the hiring managers. When I conduct an interview, I always make sure that I give a better interview experience to the candidate. So there is something called interview etiquettes, just similar to how we expect candidate to turn on his or her camera, to be in a proper and formal attire with a proper background. As a hiring manager, we also need to follow the same. We need to turn on our camera. We should start with our introduction, because any interview starts with the panel's introduction, and then the panel gives a brief about the role, and then starts with the candidate's introduction and further questions, instead of just doing a rapid fire from the very first second. So let's be respectful to each other, because we never know when the tables are turned and you can be at the other side of the table. So these are some simple and basic pointers that I wanted to convey. Please share your suggestions and comments so that everyone can learn and benefit from it. Just as a disclaimer, this video in no way is generalizing any particular group or the behaviors, but this is an attempt to contribute in solving a major problem that the hiring space within the IT industry is facing.